Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Okay, we have 25 participants so far. Um, Today's is going to be an interesting session, and it's about presentation skills. I have about 5 case studies that we will be attempting during this week, and कुछ मैंने NUMS की केस स्टडीज ली हैं जिनमें से एक हम आज रन करेंगे और कुछ मैंने स्टैनफोर्ड की केस स्टडीज उठाई हुई हैं जो लम्स की केस स्टडीज हैं वो बिल्कुल करंट और रीसेंट हैं फॉर एग्जांपल 2019 की और 2018 की केस स्टडीज हैं और जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं वो थोड़ी सी पुरानी हैं बट दे आर इंटरेस्टिंग एंड दे आर अबाउट global brands such as HP and others. So हमारा आज का सेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो वैसा ही होगा जैसे हमने पहले रन किया था ऑल्दो ये चूंकि बहुत बेसिक केस स्टडी है the objective of this case study is mainly um, to see your although इसके जो उन्होंने बनाने में जो केस स्टडी के बनाने में इन्होंने इंटेंशन रखी हुई है वो ये है कि सेकंड प्लीज जी इस केस स्टडी का मकसद ये है कि नंबर वन एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच शुड बी कैट का और फाउंडेशन डिप्लोमा का लेवल का सब्जेक्ट then understand the estimation of present value and future value, learn about residential real estate dynamics, at a major city such as Lahore, estimate relevant cash flows, including equated monthly payments using time value of money framework, and then evaluate the alternatives of buying a property versus renting a property through quantitative analysis and using time value of money framework. So I'm sure technically the concepts are already there. आप लोगों को इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए in order to evaluate, in order to come up with the with the cash flows and with the monthly payments, amortization वगैरह. तो ये I'm sure आप लोगों को इसमें बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी लेकिन जिस चीज़ की तरफ हम आज ज़्यादा emphasize करेंगे वो होगा how do you from such a basic topic or a basic subject, how do you pick up the relevant content which if has to be presented to a slightly well educated, well informed audience, तो कैसे present करेंगे आप? Will you go into the basics, the nitty gritties? Will you stay at the high level? How much high level? How do you draw a comparison between two options? How do you do a cost benefit analysis? And how do you present mainly? Okay, so it will be about your presentation skills, your presentation techniques, whether you use charts, graphs, Excel sheets, PowerPoint presentation, that will entirely be up to you. So what we will do is कि हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और इस दफ़ा ग्रुपिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी. लास्ट टाइम जब हमने ग्रुपिंग की थी तो मैंने अल्फाबेटिकली टॉप से लोगों को सिलेक्ट किया था जो प्रेजेंट कर रहे थे और इवेंचुअली हुआ ये था कि जो बॉटम पार्ट ऑफ द अटेंडेंस था वो सारे जो थे वो they were having a good time, they were supposed to ask questions, they were supposed to give all the presenters a tough time, but ऐसा कुछ हुआ नहीं. कुछ हमें थोड़ा सा वीकनेस नजर आई क्वेश्चनिंग स्किल्स में. Now this time special emphasis on questioning skills. How do you take out material? How should you be prepared to ask questions? And at the same time, how should you give the presenters a tough time, with technical questions? I mean, not just making their lives difficult, but asking questions that would put them in a difficult spot. And they really have to defend,
if they have formed an opinion, they really have to defend their opinion. So इस पे हम काम करेंगे. Presentation का please remember once again कि when you have a subject matter expert, तो नॉर्मली ये होता है कि उनकी टेंडेंसी होती है कि वो नंबर्स की तरफ ड्रॉ डाउन हो जाते हैं. So which is particularly the case with professional accountants कि उनको numbers बहुत inspire करते हैं. Whereas if let's suppose a presentation is being made to an individual who's not drawn into numbers, who wants to see uh, comparisons, want to see recommendations, wants to see analysis, and such things. So आपको infographics use करने होते हैं. आप numbers के tables और charts वगैरह नहीं बनाते हैं, आप infographics use करते हैं. So how do you do those? आपने आज उनको deploy करना होगा. एक्सेल के अंदर एक टूल अवेलेबल होता है जो एम्बेड हो जाता है एक्सेल के साथ. इट्स अ सेपरेटली डाउनलोडेबल टूल बाय द नेम पावर यूजर. अगर आप पावर यूजर अपने ऑफिस एप्लीकेशन के साथ डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको वो बहुत से ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर देता है जिससे आप एक इंटरेस्टिंग इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. So look for such tools if you want to make your presentations look appealing, look more interesting. Okay. So without any further ado, हमारे पास अब तक 40 लोग हो गए हैं. मैं वेट नहीं करूंगा because that's the worst thing you can do. मुत्तहिद ने ग्रुप्स बना दिए हुए हैं फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, मैं यहाँ से आप ग्रुपिंग करूंगा और आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जाके case study open करेंगे. The objective of the case study, I'm sure, is very clear to you. There's an individual by the name Bilal, I guess, and Bilal Malik. He's a bank employee. He wants to move out of a joint family setup with his wife and two sons, and he has contacted somebody by the name Faizan Ahmed, who's a real estate agent, for this decision of whether to go for a rented house or to buy a house. So पूरी details available है case के अंदर. Not a very difficult case. It should be interesting reading. It should be good, good analysis for you as well, in a similar situation or to make a recommendation. But this is how we're going to kick off. मैं इसके बाद आपको कुछ ऐसी केस स्टडी भी दूंगा जो फॉर एग्जांपल there's a member of ours, a fellow member of ours, जो कि लम्स में he's an associate professor. His name is Umair Haroon. वो केस स्टडी उमैर हारून ने डेवलप की हुई है. Again, a very interesting case study about investment options for different clients. How do you make investment recommendations to let's say 6 different clients with 6 different types of needs. So वो interesting case study है, वो भी आप लोगों को मिलेगी. Now remember this entire week is going to be a lot of case studies. Okay, so आज भी हम case study करेंगे, presentations देखेंगे. कल हम एक case study नहीं करेंगे, हम 2-3 case studies करेंगे. और फिर फ्राइडे के लिए आई गिव यू फर्दर केस स्टडीज. जिनको आपने बैठना होगा, उनको एनालाइज करना होगा ग्रुप फॉर्मेशन में. लीडर्स डिसाइड करने होंगे आपने. प्रेजेंट कौन कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल प्रेजेंट करेगा या मल्टीपल इंडिविजुअल्स प्रेजेंट करेंगे. मैं इस दफा प्रेजेंटेशन की लिंग्विस्टिक्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा कि व्हेन यू मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, डू यू स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस or do you stick to a particular language? Okay, how impressive is your use of jargon, particularly, right? Do you use conventional terminologies, or do you use special terminologies in your presentation? Do you pick up these terminologies from the case study, or if you already have read about them, do you bring them out of your own knowledge? So इस किस्म की कन्वर्सेशन होगी आज. चलिए अब हम ग्रुपिंग्स की तरफ चल रहे हैं. प्लीज जिन जिन लोगों के मैं नाम कॉल आउट कर रहा हूँ, एंड इट्स वेरी सिंपल, मैंने अल्फाबेटिकली अपनी लिस्ट सॉर्ट की हुई है एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम. जिन जिन लोगों के मैं नाम कॉल आउट कर रहा हूँ वो अपने हैंड रेज करेंगे
ताकि मुझे कंफर्म हो जाए दैट दे हैव हर्ड देयर नेम एंड दे नो विच ग्रुप दे आर इन। मुत्तहिद, आर यू ऑन स्टैंड बाय? यस सर। ग्रेट। मुत्तहिद, आपने कितने ग्रुप्स बनाए हुए टीम्स के आज? 5? सर 5 ग्रुप्स अभी तक बनाए हैं, क्रिएटेड। ठीक है, 5। 5 ग्रुप्स ठीक है, 5 ग्रुप्स ही होंगे हमारे पास, 5 प्रेजेंटेशंस का ही टाइम हो सकेगा। हम जो बाकी ग्रुप है, जो बाकी लोग होंगे जो प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, हम उनको भी देखेंगे कि अगर हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहेंगे तो वो करेंगे। अदरवाइज एक एटलीस्ट एक ओपन कन्वर्सेशन इस प्लेटफॉर्म पे, गो टू वेबिनार पे भी चल रही होगी। और आप सब मिलके जो बाकी लोग हैं वो रिबटल के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, वेदर एज वन टीम और एज डिफरेंट टीम्स। चलिए, मैं आपको दोनों हैंडआउट्स आपको दिखाना चाह रहा था। इफ़ यू ओपन द हैंडआउट्स सेक्शन, जो केस स्टडी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड की हुई है वो भी पड़ी हुई है, और साथ ही एक एक्सेल शीट मुत्तहिद ने अपलोड की हुई है बाय द नेम मीटिंग लिंक्स। आप लोग इसको ओपन कर लेंगे। मुत्तहिद, आपने ये जो टीम मीटिंग सेटअप की हुई है, इसके अंदर गेस्ट्स को एंट्री के राइट्स डायरेक्टली हैं या जाके ओपन करना पड़ेगा? आपने वो चेक कर लिया था? जी जी सर, वो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है और मैंने राइट्स दिए हैं। तो स्ट्रेट अवे वो जाके ज्वाइन इन कर सकेंगे। ज्वाइन ठीक है, नहीं कर परफेक्ट। सकते। चलिए, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अह, चलिए, इफ you're ऑल सेट देन, तो मैं अल्फाबेटिकली नाम कॉल आउट करने लगा हूँ, नेम्स अल्फाबेटिकली। आप लोग हैंड रेज करते जाएंगे। वसीम इलियास, उस्मान मोहम्मद अशरफ, तहमीना शहरियार, प्लीज रेज हैंड्स, ताहिरा इरम, एंड सैयदा ताबिंदा जिलानी। उस्मान मोहम्मद अशरफ, आपने अपना हैंड रेज नहीं किया, विच मीन्स कि आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं देखा। दिस इज गोइंग टू बी मुतहिद, व्हाट आपने नाम क्या रखा हुआ है? ग्रुप टीम ए, टीम बी रखा हुआ है या टीम 1 2 3 रखा हुआ है? 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ठीक है, एंड ग्रुप ये 5। ग्रुप 1 है जी, ये हमारा ग्रुप 1 है। उस्मान मोहम्मद अशरफ ने हैंड रेज नहीं किया, तो मुतहिद आप नोट कर लें, उस्मान मोहम्मद अशरफ जो है वो इज इन द कॉल बट ही इज नॉट लिसनिंग एंड ही इज नॉट रेज्ड हिज हैंड। ये आपसे बाद में पूछेंगे कि मैं किस ग्रुप में हूँ, ये टीम 1 में है। ठीक है जी। चलिए, अब हम अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। आप लोग अपने हैंड्स लोअर कर सकते हैं। द नेक्स्ट ग्रुप इज सैयद उमैर अख्तर। अच्छा सॉरी, ग्रुप 1 टीम 1 जो है, आप लोग प्लीज ओपन द केस स्टडी। यू कैन लीव दिस गो टू वेबिनार सेशन और लिंक्स में से एक्सेल की जो शीट है उसके अंदर से लिंक अपना पिक कर लें और डायरेक्टली लिंक स्टार्ट पे आप लिंक ज्वाइन करके इमीडिएटली लाइक क्लॉकवर्क स्टार्ट योर डिस्कशन। ठीक है जी। चलें, अब हम हैं सैयद उमैर अख्तर। 2 दफ़ा आ रहा है नाम इनका, मेरा ख्याल है 2 डिवाइसेस से ज्वाइन किया हुआ है। ग्रेट, थैंक यू। सैयद अजीम रजा रिजवी, शमास बलोच, शान अनवर एंड शहजाद खान। 5 people, शहजाद खान तक। ओके, शमास बलोच ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया। सैयद अजीम रजा रिजवी ने हैंड रेज नहीं किया। सैयद उमैर अख्तर ने हैंड रेज नहीं किया। मुत्तहिद इनके नाम अपनी प्लीज नोट कर लीजिए। दिस इज टीम 2। तो टीम 2, प्लीज आप लोग अपने लिंक्स पिकअप कर लें, अपने हैंड लोवर कर लें, गो टू वेबिनार से क्विट कर जाएं और टीम्स मीटिंग पे ज्वाइन करके आप लोगों ने वहां पर स्टार्ट करना है। मैं आप लोगों को इन मीटिंग्स के अंदर जाके हेलो हाय भी करूंगा और आपको टाइम भी बताऊंगा कब तक आपने वापस आना है। अभी तक जो हम टाइम रख रहे हैं वो 7:45 है। 7:45 पे आई वुड वांट यू बैक विद योर प्रेजेंटेशंस रेडी, so it's about little less than 5 minutes, less than half an hour। चलें जी।
मुत्तहिद हमने कहाँ तक कर दिया है जी? शान अनवर तक किया था हमने। शहजाद तक सर किया था हमने। शहजाद खान तक किया था, ठीक है। यस। चलो जी, नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 3। सरमद मोहम्मद मुनीर, प्लीज रेज हैंड। सलमान अहमद, साद जुबैर, रिजवान आरिफ एंड ख्वाब अलफ्तगी। अच्छा जी, प्लीज रेज हैंड्स। थैंक यू। रिजवान आरिफ, साद जुबैर, ठीक है। और राइट, सिर्फ साद जुबैर का नाम याद रखिएगा। दिस इज टीम नंबर 3। साद जुबैर भी आ गए, गुड। टीम नंबर 3, आप लोग भी अब यहाँ से क्विट कर जाएं, हैंड्स लोअर कर लें, और आप लोग भी अपना टीम नंबर 3 का लिंक पिक करके यू कैन रन ऑफ। नवीद खान, दिस इज टीम नंबर 4 नाउ। नवीद खान, प्लीज रेज हैंड। नकाश, मोहम्मद जीशान अली, मोहम्मद उमैर खालिद एंड मोहम्मद मुबशर मुनव्वर। 5 लोग हो गए जी, मुतहद 5 लोग हो गए। हैंड रेज करें प्लीज। नवीद, नकाश, जीशान, उमैर, मुबशर, ठीक है, 5। चलिए, ग्रेट, प्लीज लोवर योर हैंड्स एंड ऑफ यू गो। मुतहद 4 टीम्स हो गई हैं, लास्ट रह गई है अब टीम। सर। ग्रेट, थैंक यू। फाइनल टीम, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अदनान एस सलात एंड मुगीस खान। प्लीज रेज हैंड्स to confirm you've got your name. Thank you, Arshad. दानियाल, हैंड रेज नहीं किया अभी आपने, अभी भी नहीं हुआ। ओके, चलिए जी, टीम नंबर 5। मुत्तहिद आपने नोट कर लिया। दानियाल, अरशद अभी तक हैंड रेज नहीं किया। आप दानियाल का लिख लीजिए, ये टीम नंबर 5 में, ये बाद में आपसे आके पूछ रहे होंगे। चलें, ठीक राइट है सर। जी। टीम नंबर 5 also can now very quickly go into their respective teams group and can start the conversation there. Time is of essence। मैंने जिस सीक्वेंस में ग्रुप्स फॉर्म किए हैं, इसी सीक्वेंस में मैं कॉल कर रहा हूँ फॉर प्रेजेंटेशंस। ओके, नाउ जिन जिन लोगों के नाम अनाउंस हो चुके हैं, टीम फॉर्म हो चुकी है, दे शुड लीव द go to webinar team meeting, the webinar, and they should then go off to their team meeting. बाकी लोगों के साथ I want to have a separate conversation now. I can still see people with hand raises. Mughis Khan, दानियाल अभी तक इधर ही हैं, मोहम्मद मुबशर, मोहम्मद उमर खालिद, जीशान, नकाश, रिजवान आरिफ. There are quite a few people still sitting here. मुत्तहिद आपने नाम नोट कर लिए हैं इन सबके? आई थिंक मीटिंग तो स्टार्ट हो गई है। जिन जिन लोगों के आपने नाम नोट कर लिए हैं, इनको आप मे बी यू कुड रिमूव देम फ्रॉम द गो टू वेबिनार सेशन। रिमूव देम फ्रॉम द गो टू वेबिनार सेशन। चलिए जी, तो अब जो बाकी लोग हैं, एंड देयर आर स्टिल अबाउट 37 इंडिविजुअल्स। मैं 37 में से भी कोई 10 लोग निकाल देता हूँ, तो 27 इंडिविजुअल्स हैं जो आज का रिबटल ग्रुप है। ठीक है, अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू 15 minutes to go and read the case study, and then 5 minutes to come up with at least one question each. At least one question each. So which means we should ideally have duplicates or no duplicates, about 30 questions. Okay, और ये 30 questions जो हैं, ये from time to time हम आप लोग से, ये आप लोग इधर से पिक करेंगे क्वेश्चंस डायलॉग बॉक्स से, और इनको हम प्लांट करेंगे, पुट अप करेंगे। मुत्तहिद आप इनको प्लीज रिमूव करते जाएं जिनके ग्रुप्स फॉर्म हो चुके हैं। कैन यू कंफर्म मुत्तहिद?
Okay. Muttahid is okay. He's doing it now. Okay, so I'm just going to share my screen with you now. जिसके ऊपर केस स्टडी पड़ी हुई है, ऑल्दो आप लोगों के पास अपनी केस स्टडी भी है, but I'm just going to open up this case study and have a go at it. तो मुत्तहिद मैं आपसे प्रेजेंटिंग राइट्स ले रहा हूँ। मुत्तहिद आपने अभी भी कुछ लोगों को यहाँ से रिमूव नहीं किया। So for example, तहमीना शहरियार is there, Tahira Aram is there, Saida Sayyida Tabinda Jalani is still there. कहता हूँ एक्चुअली कुछ लोगों की ना मेरे पास लॉबी में शो हो रहा था कि वो वेट कर रहे हैं, तो मैं वहां पे उनको एंटर कर रहा था। और अच्छा, ये तहमीना शेरियार इन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, दे आर इन द मीटिंग। नहीं तो मैं मैं आपसे यहाँ ये से कह रहा हूँ कि इनसे यहाँ से इनको रिमूव कर दें प्लीज, ताकि मैं हमें अभी एग्जैक्टली पता हो कि हमारा रिबटल ग्रुप अब कौन है। कर राइट। Okay? चलिए, so typing in the questions box, if you can confirm that you have the case study in front of you. I'm going to go silent for 15 minutes and then I'll start expecting कि आप लोग अपने questions डालना शुरू करें। You have your case study in front of you. Good, thank you, Junaid. Okay, I'm going to go on mute now.
Mustahid, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. मुस्तहिद, आपने सब लोगों को निकाल दिया था यहाँ से, बिकॉज उस ग्रुप में अभी तक कुछ लोग हैं जो नहीं पहुंचे हुए। ग्रुप 4 में पर्टिकुलरली सिर्फ एक साहब बैठे हैं। आपने मोहम्मद सर, मैंने दानियाल को वन नहीं टू निकाला। थ्री को मैंने चेक किया। थ्री में 4 और 5, ग्रुप वन में 4 है अभी, और ग्रुप हाँ, तो टू में बहुत भी से लोग 4 है। अभी, क्या बहुत से जी लोग सर, अभी मैं भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। वन बाय इनको वन प्लीज चेक कर जल्दी रहा से हूँ। निकाल दें यहाँ से, ताकि अगर इन्होंने सिर्फ ज्वाइन इन किया हुआ और ये सुन नहीं रहे हैं, तो दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द
Okay, I've just been into all the groups. I think they're going to take at least 15-20 more minutes. So अगर हम 20 minutes के हिसाब से working करें तो you people also have about 10-15 more minutes. But I haven't seen any question, uh, subject related question put in the question box so far. So there are around 33 individuals over here. आप सबने एक एक क्वेश्चन पोस्ट करना है और अभी तक किसी ने किया नहीं है. So I hope once you're done with your with you reading the case study, you're all going to come back with your questions.
Okay, I have shared the questions that have been submitted on the screen. Um, I haven't received questions from everyone, but 5 or 6 people have submitted questions. Uh, Comments. Looking for questions from others as well. I think teams are still working on the presentation. We give them a little bit of flexibility there. Sorry, are you unable to hear me? Let me check. No, it's perfectly all right. I think the interesting part will be that you will notice that मैं सबके audio भी मैं unmute कर रहा हूँ microphones so that you can mute and unmute if you want. Okay. Most of you will be able to unmute yourselves now. Um, I think the conversation um, going on in different groups is that they're still indecisive about whether renting should be an option or buying is a cheaper option, and therefore, so फिरोज अभी मुझसे कमेंट कर रहे थे यहाँ पर कि probably इट बी बेस्ट अगर हम कुछ क्वेश्चंस अगर हम क्वेश्चनिंग उस वक्त कर लें जब उन्होंने प्रेजेंटेशंस दे रहे होंगे या दे दी होंगी सो आई थिंक कुछ प्रीएम्प्टिव क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस while they are making the presentation or once they have made the presentation वो होंगे तो हम इसका प्रोटोकॉल इस तरह रखेंगे कि हम we'll ask all the groups to make their presentations and once the presentations are over फिर हम by raising hands जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन सबमिट भी कराए हुए हैं और जिन्होंने वर्बली पूछने होंगे मैं उन सबको अपॉर्चुनिटी दूंगा तो वो खुद क्वेश्चन पूछ सकें so all of you be prepared for that.
चलें जी, we have group 1 back in session. ग्रुप 1 प्लीज रेज हैंड्स ताकि मैं आप लोगों को प्रेजेंटर बना सकूं, और आप में से कौन प्रेजेंट करेगा जरा मुझे उसका भी बता दीजिए. We have तहमीना, ताबिंदा, वसीम, तहमीना आपकी ऑडियो ऑफ आ रही है. ताबिंदा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. टीम 1 प्लीज रेज हैंड्स. टीम 1 प्लीज रेज हैंड्स. तहमीना, आई हैव अनम्यूटेड यू. अब आपका माइक विजिबल है. यू कैन अनम्यूट Yes, योरसेल्फ. yes, I have Please, so unmuted. who is presenting from you? The So rest who of is the team members presenting have from joined. you? I can see Tabinda Jalani here. I can see, what was it, Wasim Ilyas, right? Yeah, so we are going to start with Wasim Ilyas. Wasim, और presentation किसके system पर है? On my system. Will I be able to share it? You will have to be, sorry, you will have to be made a panelist or a presenter. And I'm going to ask Wasim Ilyas to be a panelist. Tabinda Jalani to be a panelist as well. Okay, who else was there? There was another team member. Wasim. Wasim, okay, already. Who was the fourth member, the fifth member of your team? We were only 3 members in the meeting. Tabinda, I, and Wasim. Oh, really? Okay. So there was a fourth individual as well. The rest of the members didn't join. Chaliye, any didn't join. Okay, that's a sad thing. Chaliye, over to you, group 1, and then immediately we switch to group 2. मुत्तहिद आप जाके सब ग्रुप्स को कहें कि वो ज्वाइन बैक करें. So Wasim, are you there? Or do you think I should present, or Wasim is there to present? Team is there. He has the rights to unmute his mic. So has Tabinda. You can unmute their mic. अस्सलाम वालेकुम मैम. अच्छा मैम आप प्रेजेंट करें. Okay, fine. And So why we is have. that? Sorry, why is that? सर मेरा गला बहुत खराब है, तबीयत सही नहीं है इस टाइम. So we can have There goes Tabinda some over there. brownie point. Tabinda, will you be Okay. able to share? Chaliye, let's begin. Okay, so I should begin. We didn't have much of the knowledge of the idea of calculating the buy and the rent decision. So we worked out a template and we have worked on that. So on the basis of the figure, if we consider only the figures, the home price is 13.8 million, and the rent decision, if we go to the rent decision, the basic rent is also 13.8 million, but it includes the 2% inflation rate as well.
So the 2% inflation rate is after 13.8 million rent. So considering home price, it's 13.8 million, and the rent is 13.8 million plus 2% inflation rate. So it shows that if you pay the rent, the net amount at the end of the day after 20 years is going to be more than the value of the home. Apart from that, there are other charges as well. For example, if we buy the house, there are transfer charges of 0.6 million with a broker fees of 0.138 million and loan interest of 5%. Opportunity cost, there will be an opportunity cost at the rate of interest rate of 8%, because he had invested the amount in the bank of 50 million, receiving an interest rate of 8%. So we have included that in the rent decision. If you go for the rent decision, the return of 8% would be your saving. You will be receiving that. So we have used it as a deduction here. So considering the buy decision, there are also some non-financial measures that should be considered. For example, they will be owning the house, and one of the reasons. Second, they will have more savings in the future in the form of higher capital gains. In the future, they will have 13.8 million. Uh, if the market value, if we do not consider the market value increase, they will have 13.8 million, and they are going to if they decide to sell the house, they will have it as the investment. And if we consider the rate of return on the property prices, they are going to, if they sell the house after 20 years, they will not only be getting this investment back, they will also be getting the capital gains back. So considering the rate of return on the property prices, they will have a capital gains of 13.8 million. I think we lost Tahmina. Any other group member wants to jump in? Wasim and Tabinda. Okay, no response. Wasim and Tabinda, do you want to jump in? Tahmina has gone offline. That's not impressive. Okay, Mutahid, if you're in the call, can you please check if team 2 is there? Team 2, if you're back, please raise hands. Okay, going back, team 2. Team 2, are you there?
नो 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 नो। टीम 3 के कुछ लोग आ चुके हों अगर। Okay, I think this activity is not taking us anywhere. Let me very quickly go and check if other teams are still in session. Give me a minute. Let me bring them back. Hello? Amina, we can hear you now. Hello.
Okay, I think group 1 could not finish their presentation. There were technical issues and there was nobody available to cover up for Tehmina. Tehmina, मैं आपको दोबारा से unmute कर रहा हूँ. You can unmute yourself and explain what happened. And then group 2, please raise hands. Group number 2, Yes. if you're already in. जी, Tehmina. So I don't know where did I lost the connection. So where was I? Okay, Because I kept on going on, and explained. yes, and when I finished, then I realized that I'm not in the meeting anymore. And unfortunately, both of your team members did not pick it up where you left. So just give us the final decision of what is So you the final recommended decision was that out of the two. we decided for the buy decision, as it had savings and the higher capital gains option in it. ओके ऑलराइट, चले अब हम अगले ग्रुप की तरफ चल रहे हैं. इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप लोगों की ग्रुप की प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो सकी. अगेन अ रियल लाइफ एग्जांपल एंड व्हाट कैन हैपन, बट one needs to be prepared for this. Group number 2, raise hands please. Group number 2 and group number 3. I don't see anybody raising hands. What? Why are people shy? Oh, there we go. Saad Zubair is there. Bob is there. Who else? Making you. Sorry, let me unmute you first. जी, साद एंड ख्वाब, आप दोनों में से आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स किधर हैं और आप में से प्रेजेंट कौन कर रहा है और कौन प्रेजेंट नहीं कर रहा और व्हाई आर दे नॉट प्रेजेंटिंग? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ख्वाब एंड साद. जी अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम ख्वाब. सर ये ग्रुप 2 की अभी प्रेजेंटेशन है कि डायरेक्ट ग्रुप 3 की है हमारी है? आप ग्रुप 3 हैं. ग्रुप 2 अगर नहीं प्रेजेंट करेगा तो हम उसको स्किप करेंगे और ग्रुप 3 की तरफ जाएंगे. सर एक्चुअली हमारा जो ग्रुप मेंबर सलमान. जी, सॉरी ख्वाब, मैंने आपको अभी मेड यू पैनलिस्ट. आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए फिर से. जी ख्वाब. जी सर, सलमान के पास हमारी प्रेजेंटेशन फाइल है, जो ग्रुप मेंबर हैं वो शेयर कर सकेंगे. सलमान को मैं एज प्रेजेंटर लेकर आ रहा हूँ. जी सलमान, आप प्रेजेंटर हैं. यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ. और आपके ग्रुप में से अभी 3 लोग यहाँ पर आए हैं. बाकी लोग कौन है? 2. ग्रुप 3 रिजवान भाई हैं जी, रिजवान और सरमद भाई और पैनलिस्ट. साद भाई हैं. साद ऑलरेडी आ चुके हैं. इट्स द 5th इंडिविजुअल. ख्वाब हैं, रिजवान हैं, साद हैं, सलमान हैं और सलमान प्रेजेंटर हैं. सरमद मुनीर भी है। सरमद सरमद शायद उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया हुआ. सरमद जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम उनको इंक्लूड कर लेंगे. In the meanwhile, who's presenting from this group? प्रेजेंटेशन सलमान के पास है और 4 लोग इस पर मौजूद हैं. Who's presenting from the group, please? जी ख्वाब. जी सलमान आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं एक्सप्लेनेशन साइड पे हूँ. Quab will present and Salman will share the slides. और explanation सारे मिलके दे देंगे जिसको जो point explain करना हुआ. I can smell fear. Why is that so?
Sir, it's just all because of we them didn't were have enough time. आपसे डर लगता है सर. okay. Oh, come on, come on. I'm a very cheerful person. Why would somebody be No, scared of me? no doubt, sir, no doubt. Tell it, go on. Go on, take a shot. Go on. Yeah, I'll just start. So the background is, first the case study is whether Lahore is suitable for rental properties or purchasing properties, investment in purchasing Okay. properties. We have a case study here जिसमें एक middle aged family guy है, family person है, he is a bank employee and he is living in Wabda town with joint family. कुछ इमोशनली चैलेंजेस का उनको सामना है एंड ही हैज टू नाउ डिसाइड वेदर he'll rent a house or buy a house due to some family issues. And what he bags in terms of financial terms is that he have he have inherited an investment of more than 5 million, more than I say, because it is being invested in bank at the rate of 8% since 2 years from now. And he also have other option that he can borrow money from the bank against his salary at considerably lower interest rate. Salman, next slide करें. Yeah, तो just to give an overview, ये हमारे पास लाहौर के रियल एस्टेट मार्केट के स्टैटिस्टिक्स हैं. सलमान थोड़ा जूम कीजिएगा इसको. थोड़ा और कीजिएगा. यस, दैट्स फाइन. अच्छा, अब लाहौर की डेमोग्राफिक्स ऐसी हैं कि इसमें पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड हुई है. इट हैड सेवरल रीजंस बिकॉज डेवलपमेंट सेक्टर में हमारे पास 3 कंपनीज थी, एलडीए और फिर प्राइवेट सेक्टर और डीएचए जो पब्लिकली बेनिफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है. और इसमें कंस्ट्रेंट यहाँ पे आया कि डेवलपर्स ने जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो लार्ज स्पेस प्रॉपर्टीज हैं उनको डेवलप करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट लिया, एंड दे डिडंट गिव ड्यू केयर टू डेवलप lower spacious house that average man can afford. Due to that, a deficit or room have been created which cannot be filled by those average buyers, and ultimately problems arise. और फाइनेंसिंग के इश्यूज भी होते हैं हमारे यहाँ पे, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस वजह से भी हमारे जो हाउसिंग मैटर्स हैं वो अक्यूमुलेट होते गए और मार्केट जो है वो सैचुरेट होती गई. इसमें 1998 से 2017 तक लाइक 20 इयर्स का ये कंपैरिजन दिया गया है, जिसमें पॉपुलेशन कंपैरिजन हैं कि कितने ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए और डेंसिटी वगैरह, ये स्टैटिस्टिक्स हैं जिसमें लाहौर को दिखाया जा रहा है. सलमान, नेक्स्ट. जूम इन कर दें थोड़ा सा. Yes. Now we come to the rental or buying decisions, and we are basically interpreting here the fruits and the cons of both decisions. First, if we consider buy, we have to arrange an investment of more than 13 million because the family selected the house in DHA phase 11 area B, which requires the set amount of investment. Second, the main benefit of this DCM would be that the family would have an asset with capital growth of 6%, and the market is good, the property market is good in Lahore, so it will be an attractive decision. सेकेंड, फिर हमारे पास इसमें टैक्स बेनिफिट भी आ रहा है हमारे पास इन टर्म जब हम बैंक से लोन लेंगे. फिर हमारे पास बैंक से लोन की भी ऑप्शन है जो मार्केट में 12% पे मिल रही है, लेकिन बैंक क्योंकि बैंक एम्प्लॉय है
मिस्टर बिलाल, तो वो उनको 5% पे मिलेगी। इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें पड़ रही है वो ये है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट की है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो हमें पर ये 8% ग्रो करेगी, वो हमें लूज करनी पड़ेगी। और ये जो हमारा डिसीजन होगा, क्योंकि किसी भी डिसीजन में, फैमिली डिसीजन में इमोशंस का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो ये डिसीजन फैमिली सपोर्टेड है, बोथ बाय हिज वाइफ एंड बाय हिज पेरेंट्स। और इसमें जो फीस है वो भी वन टाइम है, ब्रोकर को भी वन टाइम देनी है और ट्रांसफर फी भी वन टाइम है, तो इट विल बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सलमान, नेक्स्ट। Now, if we consider the rental options against buying option, it's suitable in short term, apparently, because rental में हमें इतनी बड़ी investment की जरूरत नहीं है जितनी buying में है, but it comes with its cons or the opportunity or the opportunity cost of longer term benefits. इसमें हमें asset की ownership नहीं मिलेगी, हमें कंटिन्यूस रिटर्न तो मिलेगा, अपना सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर तो होगी, लेकिन जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉपर्टी, वो फॉरफिट करनी पड़ेंगी। टैक्स के बेनिफिट्स हमें अवेलेबल नहीं होंगे जो हम बोरोइंग करके वहां पे स्पेंड करेंगे। इवन और फिर द इमोशनल पार्ट फैमिली से अपोज्ड है, और इसमें जो सडन रीलोकेशन का पार्ट होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस और एनी अदर रीजंस, आपको एरिया शिफ्ट करना पड़ जाता है, से आफ्टर 3 months, आफ्टर 6 months, whenever it's a sudden shock after receiving the relocation notice, so we have to be ready for such risks. So there is a clear difference between the two decisions. If we value both decisions, if we weigh both decisions, because I have to mention it here कि हमें calculations करने का time नहीं मिला, लेकिन we would go with buying options because उसके जो pros हैं, उसके जो benefits हैं, वो outnumber कर रहे हैं rental options को। And that's it from our side. Thank you, Quab. आपका बाकी group was mostly silent. Um, uh, okay, I think good presentation, but let's move on to the rest of the presentations now. इसके बाद हम questions pick करेंगे. I think the rest of the participants are all ready with their tools and nails and hammers to check, how solid is your stance. चलें जी, let's go Yes, back and sure sir. और बाकी ग्रुप इसलिए नहीं क्योंकि प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंट मैंने करनी थी, जब एक्सप्लेनेशन का टाइम आएगा तो फिर वो सारे मिलजुल के कर लेंगे, इसलिए हमने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। Okay, but the thing is that Bob, the thing is that everybody has to present also. Otherwise, if people don't present, I mean, if there is a fear, which I'm sure should not be there, but if there is a fear, वो सिर्फ इसी सूरत में वो fear dissipate हो सकता है अगर if you come in and speak. Okay. Yes, sure sir. So We'll keep it in mind, sir. We'll keep this in mind for future sessions. This is an opportunity. I mean, I may be I may sound like a vicious, audience, but believe you me, when you're making the presentation out there, the audience is much more tooth and nail. The audience is much more vicious than Harun Jan. So just be prepared Exactly for sir, that. exactly. Okay. Exactly sir. चलें जी, ग्रुप 4 मौजूद है जी अब। ग्रुप 4 ओके, मोहम्मद अरशद हैं ग्रुप 4 से। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बाकी लोगों को यहाँ से कर रहा हूँ, या मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। चलें, straight away I'm going to add जी। ग्रुप 4 प्लीज रेज हैंड। मोहम्मद अरशद ने भी हैंड रेज किया था। ईशान अली, ओके, एक पैनलिस्ट। मोहम्मद मुबशर अनवर,
analyst. Gee, who else? Only two people in the group? Arshad, आपने hand raise किया था. Are you a part of the group? नहीं हारून साहब मैं ग्रुप 5 में हूँ सॉरी अबाउट दैट Okay, all right, no problem. Okay, so out of the two, who's making the presentation? I'm talking to Mubashir and Zishan. Both of you have microphone control now. अस्सलाम वालेकुम सर Assalamu alaikum. आपके और ग्रुप मेंबर्स कौन हैं और आप में से प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? जी मैं ईशान? जिशान बात कर रहा हूँ सर मैं प्रेजेंटेशन कंडक्ट करूँगा सर लेकिन मुझे Okay. ऑप्शन नहीं मिल रही कि कहाँ से मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी एक सेकंड. अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगी. कौन? यस सर और जीशान, आपके सिर्फ दो ही ग्रुप मेंबर्स थे? सर थे तो 5 बाकी भी इधर ही होंगे आई गेस Can you call out for them? यस if Umair and Mubashir can please and Naveed Khan if you can please join me in this presentation should we start now sir जी आप स्टार्ट करें, लेकिन मैं नोट कर रहा हूँ कि अभी भी वो फियर का एलिमेंट या नॉट मेकिंग प्रेजेंटेशन का एलिमेंट, सिटिंग बैक का एलिमेंट मौजूद है. नवीद खान थे जी नवीद खान साहब हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मुबशर बात कर रहा हूँ. मैं लेट सेटिंग कर रहा हूँ तो मैं इधर उधर लोगों से बात करूँ, कभी बॉस से, कभी इधर कभी उधर, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. चलिए कोई बात. चलिए ठीक है जी. जीशान, ओवर टू यू. जी so the case study was on buy versus rent dilemma. That's the first slide on my presentation. And moving on to the second slide, I will briefly conduct to introduce the background of the case study. So the family was living in a 10 Marla house and it was joint family system. And Mr. Arshad Malik, who is the guardian of the family, he faces some domestic problems and familial conflict in the house due to the wives of his two sons. So, going further in detail, Mr. Arshad bought 5 acres of land, which he sold in 2018 for 15 million, and ultimately he divided all the 15 million in 3 parts, equally 5 million distribution between himself and his two sons. So, due to the conflict between the family, his elder son Bilal Malik wanted to shift out from the house so that he can avoid the conflict. And although Mr. Arshad Malik's nature and his stance was to keep the family together, but due to the family issues, Bilal decided to move out so that the bonding remains the same. So moving on to the third slide, I would like to give a brief what was briefing on what was going in Lahore real estate market. So the in Lahore, population growth was increasing, but the construction and housing development was not as per requirements of the population. So as the most of the population was not very on the upper class, and they were preferring to get smaller apartments and small houses rather than big houses. So the moving further, in Lahore there were developers like LDA and DHA and
also private developers. Developers were given a lot of tough time, as they had to go through a lot of departments to get the approval for developing societies, and DHA in the meanwhile, DHA developed the houses, but they were like very big in size, like one canal and two canals, which were not affordable for smaller families and families with lower income. So this was the main uh, problem in the real estate scenario, that how the small houses were not available. Available, if available, then they were very in very short quantity, and large houses cannot be afforded by the families. So moving on to my next slide, I would like to share the available options for Mr. Bilal Malik, as he was opting out to get a new house to avoid the conflict. So the available options were an 8 marla newly constructed house in available, which was on a monthly rental of 57,500 rupees, and the second option was to buy that same house in the price of rupees 13.8 million. So in my next slide, if you can see, so as per the scenario of the case, the feasibility of buying the house was looking more appropriate than renting the house. So I would like to share some pros of buying the house. So first of all, it will be add an addition to the asset, addition in a valuable asset in his for Mr. Bilal, and secondly, the bank loan interest, as he was a bank employee, so he was offering a 5% rate of interest for the loan if he take for buying the house, which is lower than the market rate. So the third point is that he will get the benefit of an enhancement and upward revaluation of property by 6% per annum, which will be further increase his property. And the fourth one is the tax incentive offered by the government on buying the houses. And the last one is that he was also supported by his family, as his wife was also intends to buy the house rather than renting it. And his father, when he bring his father and family to show the house they selected, they also were in the interest of buying the house, that you should buy the house. So in the last slide, I would like to elaborate some cons for rental decision. First of all, it would be a monthly cash outflow, as he if he gets the house on rent, he there will be a monthly cash outflow, as which I briefed in last slide, that it will be 57,500. And if we consider his salary, which is 155,000, and out of that, if we allocated 57,000 to the rent, that would be in my opinion, it would be
cash difficulty for Mr. Bilal. Secondly, there, as mentioned in the case, there will be an annual increase in rent, which will further add, cash outflow in the coming years. And the last one is the non-ownership of asset. After paying such a huge amount in terms of rentals, he will not get the ownership of asset. So as per our understanding and our of the case, we think that buying the house is a more appropriate decision. Thank you. Uh, okay, I think interesting presentation. Of course, with need for improvement. But let's go to the last group for today, and then I'll hand over some tasks to you. और इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे. लास्ट ग्रुप, प्लीज रेज हैंड्स. ग्रुप नंबर 5 अरशद हैं, एजाज हैं. ओके, सिर्फ 2 ही लोग हैं जी. ग्रुप नंबर 4 अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए. Group number 5, you have the microphone control now. Please unmute your mics and tell me if there's any other group member. We have Ajaz and Adnan. We were 3 members in the group. So Ajaz is there. I was wondering Adnan is joining us or not. Adnan He was Salah. saying he had a meeting. Mohammed Adnan. Mohammed Yes, Adnan, if you can raise your hand. Okay. अच्छा जी, आप तीनों में से प्रेजेंटेशन किसके सिस्टम पे है? So presentation मेरे पास है. मोहम्मद अर्शद बात कर रहा हूँ, and we'll all go through the presentation section by section. Excellent. That's like it. Challenge. Over to you. Arshad, you are the presenter. Please take a note of time. We don't want to take 15 minutes for the presentation. Please just wind up the presentation in 5 to 7 minutes so that we have some time for questioning. Ji, Arshad. All right, thank you very much. I hope you can see my screen. So we were 3 group members, Ajaz, Adnan, and myself, Mohammed Arshad, and we are discussing today the buy versus rental dilemma in Lahore and the residential real estate property. So this presentation will be between 5 to 7 minutes, not more than that. We have 2 different sections. One is what is the current situation, and the next is about the analysis of the situation, and the last part is about the recommendation. I will be presenting the situation, what is right now, and then my next colleagues will be presenting analysis of the situation and their recommendation. So moving to the next slide. So we noted that the population size and the number of households are doubled in the last 20 years as per the case study information provided. So that indicates, and along with that, we also noted that number of persons per household has decreased from 12% to 12% almost. So these 2 factors indicates that demand of household unit has increased multifolds. The developers that are in the sector, including government developers and non-government developers, are focusing on larger size units, whereas the demand for the smaller size units is on rise because of the financing options available or the financing one has with him or her. The sector is also not properly regulated. I mean, people are there are many societies that have been sprung up over the period, and they are not properly getting no objection certificates or things like that from the government authorities, and issuing or selling their properties to the prospective buyers, and are also alleged to many corruptions. Keeping in view the demand of smaller households, apartments demand is also in raise, and that is also coming in trend, as is the situation with all capital big cities. And towards the end, we noted that individuals, for every individual, the purchase decision is a big decision. They have to keep in mind all the pros and cons because this is a huge investment, and it has a large risk factors in itself in terms of getting financing from others, and then
It is a big investment, and if people are risk avert, they have option like Mr. In this case study has the option to have his funds invested in a bank at the 8% rate without any risk. On the other side, he can invest his available funds and he need to go to get more financing from the bank to buy his house if he decides to go for purchase of the house. With that context in mind, I will hand over to my next colleague, Mr. Ajaz, to discuss the analysis of the situation. And Ajaz, over to you, please. Coming over to the analysis, high cost of the purchase and including ancillary costs are also high. Tax benefit on mortgage loan. Liquidity is manageable in case of rental. Okay, so we move on to the next and last part, which is about the recommendation. What is a group recommendation out of this presentation? So, Adnan, over to you, please. Thank you, Arshad, and thank you, Ijaz. So, guys, as my colleagues has also mentioned regarding the analysis and the observations which we have during that case study. So, what we recommend based on the numbers is we should go for the purchase of the house. When it comes to a decision, everybody should know the opportunity cost of investing versus financing. So purchase जब हम करने जाते हैं तो उसकी cost है approximately 19 million, right? Versus जो rental cost है, it should cost almost 18 million. For if we can calculate the number based on 20 years figures, having said that the inflation, all that factors accumulate basis पे अगर हम देखें, so purchase का जो अगर decision लेते हैं तो ultimately it brings the ownership and sense of ease to the family and to the generations as well. उसके अंदर फिर हमारे साथ एक good जो केस स्टडी के अंदर जो एक good point नजर आया वो ये कि जो लोन लेने वाला बंदा है अर्शद, वो जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयड है और उसका जो टैक्स बैंड है उस पे उसको जो है वो टैक्स बेनिफिट काफी मिलता है अगर वो फाइनेंसिंग कर लेता है. और after 20 years he don't have to pay any rental payments. और meanwhile जब वो फाइनेंसिंग कॉस्ट बेयर कर रहे होंगे इसकी तो ऑन द अदर साइड जो कैपिटल गेन्स है एसेट के ऊपर वो रिस्पेक्टिवली इंक्रीज हो जाएंगे. और जो पर्सनल जो एक रीजंस हैं कि बंदे के रेंटल इश्यूज होते हैं, ओनरशिप होती है, इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाती है, बिकॉज इफ यू स्पेंड सम time like 20 years in a house, that is somehow you got an emotional attachment with that particular piece of land. So after rentals you don't feel कि इसको छोड़ना चाहिए, right? और ownership के अंदर वो चीज आपकी अपनी position में होती है. So we recommend as a group that we should go for buying a land and build a house. Thank you so much, guys. Thank you very much. We've had all presentations except for one group, which is group 2, and unfortunately we will not be able to give them time to make a presentation now. Okay, so I think we have listened to the presentations. Of course, इसमें अभी जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाता हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि this case study was written by a faculty member at LUMS who was my finance professor as well. So Dr. Fazl Jawad Sayyed is the author of this case study. A very intelligent man, I must say, and I think he's written a good case study. मैं आपको सिर्फ अभी कुछ presentation पे कुछ the presentations that have been made. I would like to comment a bit about those, and then I'll pick up 3 questions. In fact, I'll ask the audience to raise hands, and we pick up 3 questions to be answered by all the people who made the presentation. So about the presentation, number 1, एक चीज जो मैंने observe की है वो ये है कि when you're speaking, you have to speak with a certain fluency. Okay, when you're speaking,
the hums and ahs and ums, ye jo hain, ye they indicate lack of preparedness. And of course, I'm not blaming anyone, but of course, we had very little time in this session today. One needs to, in early days at least, one needs to practice and practice and practice till the time you achieve fluency in when you're speaking. So that is number one. Abhi, after this session, I'll give you a bit of a task. You'll take back these presentations. You'll take back your PowerPoint decks, uh, and you'll have to, improve them. And I'll, put in a little spin in there as well. Okay, maybe आप लोग के नाम से होगा. Secondly, um, it's very simple. This activity is all meant to give you the confidence to come in and speak. More than half the teams, they did not present. I went from group to group. They were included, they were participating, etc. लेकिन जब मैं कॉल अप कर रहा था टीम्स को, तो टीम्स मौजूद नहीं थी, उनके पार्टिसिपेंट्स हाथ हैंड रेज नहीं कर रहे थे, etc. As a result, a lot of issues. But at the same time, I was feeling that there is this fear within people who don't want to present, who don't want to talk, who don't want to hold a mic and talk. Remember, these presentations are a million times easier than the ones that you have to make if you're standing in an audience in person, even if there are 10 or 20 or 30 people in the audience. Those presentations are really, really stressful. So if you are not able to take a start now, you will unfortunately not be able to, never be able to, in fact, overcome this fear. So that was number two. Number three, if you pick a particular language to speak in, try to speak in that language through and through, which means do not try to switch language based on your, your ease of speaking or your fluency. You have to decide that before you go in. If it is a high-level meeting, a high-level presentation, etc., we'll prefer that you use English as the medium. But if it is about confidence, if it's about technical discussion, and the discussion is so so important that you cannot go wrong, there is no harm in doing an Urdu presentation, a presentation in Urdu or a bilingual presentation. But in that case, your content has to be very, very accurate. Your analysis has to show off. It should pour out. So work on that. Last but not least, what I'm going to do is इस सारी सिचुएशन के अंदर, सिनेरियो के अंदर हम कुछ स्पिन्स डालने लगे हैं. So for example, in this situation, Bilal Malik was an employee of the bank, and therefore he was able to get a house loan at 6% or 5%. ये figures मैंने notice किया, कुछ लोग 6 mention कर रहे थे, कुछ 5. What if Bilal was not an employee of the bank? What if he had to get loan at the market rate from one of the banks? What will be that tipping point जहाँ पर जाके decision buy से rental पे switch कर जाएगा? So you have to find that. That's number one. Number two, कुछ लोग जो अपने financials की working नहीं कर सके थे, please do that. Number three, when you are drawing a comparison, okay, and I'm talking about the same thing जो मैंने session start पे mention की थी, when you're drawing a comparison, when you're doing a pros, which is prospects, and cons, which is consequences, the analysis. So prospects and consequences ka analysis, when you're doing that, it is always a good idea to put things side by side in one slide, not on different slides. Because if you've made a few points in one slide and then you flip the slide, it's gone. And then there's the next slide in place. Okay. And what you don't want to do is switch between slides to and fro. देखिए मैंने पिछले में ये कहा था, अब मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए ये चीज ज्यादा वेट कास्ट कर रही है, therefore my decision is, or my recommendation is XYZ. So I think जब हम सैमसंग की केस स्टडी भी कर रहे थे, तो there was one particular group I still remember जिन्होंने
olden days of the older chief executive and the newer chief executive, the father and the son, उन्होंने एक comparison draw किया हुआ था with the slide divided into two, and I think that's the best way of making sure that what you say it stays in there. So I think good activity, good presentation. थोड़ा सा हमें इसको speed up करने की जरूरत है, थोड़ा सा teams को encourage करने की जरूरत है. अच्छा जी, अब मैं अपनी last condition put forward कर रहा हूँ, and that condition is that every group member must present. So what we are doing is we are going to go back, same groups, in ये 5 groups जो बने हुए थे, we are going to go back and we're going to work on these on these presentations again. Okay, remain in your groups and work on these presentations again. Come back on Wednesday. Everybody makes a presentation in a clockwork. So starting from team 1, going on to team 2, 3, 4. अभी मैंने अगर notice किया है, so तहमीना चूंकि ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस हैं, so she did a good job. उनको अगर टेक्निकल इश्यूज आए हैं, उसके लिए उनको तहमीना ने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये लिखा है, इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए था, और वो प्रिपरेशन आपने सोचनी है कैसे करनी है. बट टीम नंबर 5 की प्रेजेंटेशन अभी सबसे बेहतर थी, सारे ग्रुप ने प्रेजेंट किया, आर्ग्यूमेंट्स अभी हमने इसके ऊपर नहीं किए हैं, राइट, बट एटलीस्ट वी कुड वेरी क्लियरली सी कि उनकी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस थोड़ी सी बेहतर, and of course that's because they got more time as well. Uh, so now coming to questions, if you've taken this, this advice, most of you have still microphone control, you can add to it, but at the same time, what I want to do is to have a quick look at the questions and throw some questions at the teams to see what the level of preparedness was. Okay, so अच्छा, इसमें एक तो चीज़ें मैं और भी पूछना चाह रहा था. अभी हमने, फॉर एग्जांपल, when you bring in this factor that Bilal Malik is not a bank employee, तो अब जो उसको लोन मिल रहा है वो फिक्स्ड रेट पे मिल रहा है, फ्लोटिंग रेट पे मिल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी की आउटलुक क्या है, is the interest rate going to increase in the future, is it going to decrease, etc. It's going to be a long term loan, what is the best course of action, for financing. तो ये सब चीजें भी आपकी एनालिसिस का पार्ट हो सकती हैं. जी, questions. So those who want to ask questions, please raise hands. इस वक्त आकिब नूहुल्ला ने और फहद मोहसिन ने हैंड रेज किए हुए हैं. मैं अनम्यूट किए देता हूँ दोनों को. प्लीज गो वन बाय वन, एंड इफ यू वांट टू से समथिंग. महविश फातिमा भी हैं. जी फहद, सर, गो फर्स्ट. फहद है. अस्सलाम वालेकुम. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली रिग्रेट कि मैं ये सेशन टाइम पे नहीं ज्वाइन कर सका, बिकॉज इट लुक लाइक माय टाइप ऑफ केस स्टडी कि जिसमें मुझे थोड़ा सा वो इन्वॉल्व होना चाहिए था. मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन है कि अब जब हम डिसीजन मेकिंग की कर रहे हैं, मेरा अब जाहिर सी बात है, ये मैं प्रेजेंटर से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरे पास 5 मिलियन, अभी मैं इंटरेस्ट को फिलहाल इग्नोर करता हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सका. सिंपल मेरे पास 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है. क्या मुझे 5 मिलियन सारा का सारा डाउन पे, मतलब 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट में पे करूं और जो डेफिसिट आ रहा है उतनी अमाउंट का लोन लूं, या मुझे मैक्सिमम अमाउंट का लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट बचानी चाहिए? ये किस तरीके से अगर कोई ग्रुप उसको आंसर करना चाहे. ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं कि फाइनेंसिंग अमाउंट क्या है आपकी और आपकी अपफ्रंट फिर उसके वो सॉरी, ये इंट्रैपमेंट सवाल है, इसके बाद फॉलो अप भी हैं 2-3 वो कोई अगर आंसर कर सके. चलिए, अभी हम ये कंटिन्यू भी करेंगे, ऑफ कोर्स, ये डिस्कशन इन द नेक्स्ट, बट इफ एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ क्विक शॉट एट इट, एनी ऑफ द प्रेजेंटर्स. Assalamu alaikum. Sir, I wanted to answer this question. I'm Shan. And Shan wants to answer. Sir, as per question, he asked if he has to invest, all the 5 million which he had in his investment to buy the house and go for the loan of the rest of the amount. I would like to add that the loan he is getting from the bank is interest rate on 5%.
and the interest which he is getting on his investment is 8%. So comparing both interest rates, he is getting additional 3% of inflow on as interest on his investment. So keeping this in view, I would suggest that buying on the whole, taking loan of whole amount for buy the house would be more appropriate. Thank you. We need to keep in mind also the limit that he can the loan. जी ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब जो मेरे जहन में था वो भी उन्होंने इसी तरह एक्सप्लेन किया है कि आपको इंटरेस्ट के अंदर से भी ना सेविंग हो रही है कि आप सपोज अगर 5 मिलियन पूरा आप अपनी जो सेविंग है वो आपने इंस्टॉलमेंट दे दी, प्लस आपने आई थिंक 13.8 मिलियन -5 किया, तो आपने डिफरेंशियल अमाउंट का अगर आपने सिर्फ लोन लिया है तो आप उस पर अर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सारा का सारा आपने थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी है। अगर आप पूरा 11.3 या 11.5 मिलियन का लोन ले लें तो आपको वहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग भी होती है। अब अगर यहाँ पे कैलकुलेशन होती तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए बाकी चीजें करते हुए ये चीज भी वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती, कि मतलब है ना कि स्केड्यूल बनाते हुए तो क्लियरली शो होता कि भाई इन एनी केस आपको है ना, मैं तो अब ये कहूंगा कि बेशक वो घर ना भी खरीदे, वो 11.5 मिलियन का लोन उठा ले मार्केट से, सॉरी बैंक से, ताकि उस पर 3% इंटरेस्ट तो वो लेता रहे। तो ये चीजें, बट आई थिंक कोई पॉलिसीज होती है कि बैंक का लोन उठा के अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते एंड आई ऑल थिंक दैट, इस बट पे अगर फर्दर अगर वो रिक्वायर्ड कि दूसरी चीज अगर वही ना, दूसरी चीज है कि अगर मैं 11.3 मिलियन का पूरा लोन उठा लूं, उसके ऊपर मेरा रेंटल कॉस्ट तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, जितना मैंने अगर लोन लेके सिर्फ उसे इन्वेस्ट कर दिया बैंक में और उससे रेंटल पे कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो जीरो हो गई ना, कि वो तो सारा का सारा मेरा लोन ही कवर कर जाएगा। इस एंगल से किसी ने उस चीज पे मतलब बहस नहीं की या कोई एनालिसिस नहीं हुआ कि मैं सिंपल, जरूरी तो नहीं है ना कि स्पेसिफाई नहीं किया मैंने लोन लेना है तो मैंने घर ही खरीदना है, लोन लेके मैं रेंटल पे कर देता हूँ। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम अगर लिमिट कर रहे हैं उसको, यू नो, if the decision is whether to buy or rent, and it's only about a house, it's not the opportunity, it's not the interest money, I mean the extra earning to interest income, if that is not an objective, so तब इस सिनेरियो को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बाकी कैवियट्स को भी ऐड करते हैं इसके अंदर, तो ऑफ कोर्स इट कैन बी अ लॉन्गर डिबेट, एंड ऑफ कोर्स हम जब अब आपको जब हम टाइम दे ही रहे हैं अबाउट 2 days, आई थिंक आई एम श्योर all of you can make a very nice detailed case of how this decision to be taken. I love the concept of opportunity cost, and there was only probably one group that had taken in opportunity cost as a factor. Yeah. There is a point in if we take the loan and then pay rentals rather than buying the house. I think the major point over here is that you will not get the ownership of the house after paying a handsome amount in rentals. Thank you. Mehvesh Fatima, you wanted to ask a question, मैंने आपको unmute किया है. Yes, And then Assalamu Junaid alaikum. Khalid. Yes, Assalamu Assalamu alaikum, alaikum. Mehvesh. Okay, my question is why Bilal is considering Defense Phase 11 as preferred location? Like why he is preferring this location over the others? So anyone can answer? Okay, I think anybody wants to take a shot on this? I want to answer. I'm Rizwan Arif. Rizwan. There is clearly by mention in the scenario comparison of his existing house and the other options available, और उसमें उन्होंने कंपेयर किया हुआ था कि DHA phase 11 is most suitable option for them. Akib, What? you wanted to ask Why? a question? I would like to add in over here that as the phase 11 was is underdeveloped and costs of buying the houses over there was lower than the other developed areas, so that's why the Bilal's decision was to go for buying the house in phase 11. Thank you.
Assalamu Yes, Junaid Khalid. Ji, somebody wants to speak. I want to speak. Actually, the 4 points are mentioned there. The parents' homes are nearby. Uh, there was a lower rates as compared to the other areas, and the capital gain which is expected in the future, and the property size variety is also available in that area. So that's the reasons of all that. Okay. Thank you. Thank you very much. Junaid, you wanted to ask a question. Junaid Khalid. Go on, please. Yes, actually, I just want to add that if they are considering the lower size of the plot, which is then they finance total from the loan and they will get the house as well, which is why they are not considering that. If you check the index, you will find the price with the five Marla house, and they are having the fully constructed house of 11.4 million. Yeah, then they have the investment opportunity as well. Plus, they can finance easily through the loan. Yeah, why they're not considering that? And area is also same. DHA phase 11 is the same, but only the size is different. Instead of getting the house of 8 Marla, you're getting 5 Marla. Thank you, sir. Thank you. Anybody wants to answer this question? Okay. Silence. Size of the plot or size of the house. Chale. Junaid, your question is so difficult that people probably don't want to take a shot at it. Shehbaz Hussain, मैं आपको unmute कर रहा हूँ. Very quickly ask your question and then we try to wind up. Hassan, आपका भी मैं question लेता हूँ अभी. Hello. I will, Shehbaz. yeah. With reference to the previous comment, I will add just one thing. When we look at these numbers or the data given in Exhibit 2, small houses retain more value after 20 years, whereas the big houses lose the value. And this, for example, the gain is also higher on smaller houses. Smaller. So I was thinking nobody considered buying a smaller house and keeping the investment intact, but there it varies. So I haven't seen that in any presentation. Okay, that's an observation. Okay. Hassan Saleh. अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, मेरा एक क्वेश्चन था जी आकिब जी। अच्छा, मतलब कि हम सब लोग ये कंसिडर कर रहे हैं ना कि हमारी जॉब फिक्स रहेगी, तो अगर फॉर एग्जांपल बिलाल की जॉब चली जाती है, उस केस में क्या आया उसके लिए रेंटल बेहतर रहेगा या फिर वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट लगा चुका होगा और वो जो उसने लोन लिया होगा वो मॉर्टगेज होगा वो उसके लिए बेहतर रहेगा? क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर उसके पास बैंक में पैसे होंगे जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सकेगा, दूसरे केस में उसके पास कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू। Right, good question. Although normally what I've seen happening, Akib, in this industry is that if people move from one bank to another bank, what happens is the new bank and they're taking on an employee, वो इस negotiation को include करते हैं at the time of hiring, whether the person is carrying any loans, etc. और अगर होते हैं तो वो loans transfer हो जाते हैं to the new bank and the previous bank or the previous employer is paid off. But still a good question. If he loses the job, if he doesn't get a job in a bank, what does he do? So that's a question as well. And उसकी कोई क्या बैंक ने as an employee जब loan दिया है तो कोई terms and conditions mentioned हैं which state that the loan, the interest rate of the loan will be reverted to the market rate. So good consideration once again. चलें अब I think हसन का question रह गया है. हसन ने hand raise किया हुआ था and then we'll call it off और उसके बाद हम Wednesday को we will start afresh. You get this time, we will see कि इतना टाइम मिलने के बाद कैसी preparation होती है और कौन कौन present करता है. So Hassan, if you want to ask a question very quickly and then. Thank you, sir. I will be very quick. Okay, so I just wanted to add that from
Sir Harun, I cannot hear you at the moment. Gee, can you hear me now? Ji, I can hear you now, sir. Okay, Gee, so I just wanted to add that sorry, there seems to be something wrong with Hassan's internet connection. Sorry, Hassan, आप अपना question type in कर सकते हैं if you like, and I'll put it up. We are facing difficulty in hearing you. Okay, let's in the meanwhile let's try to wind up the session. Anybody who wants to comment about the way the presentations were made, अगर किसी को इस बारे में कोई comment करना है, तो please अपना hand raise कर लें. मैं एक दफा सबके hand lower कर देता हूँ. Presentation style पे कोई Hello. somebody wants to speak. Hello. जी, Usman Mohammed Ashraf. You want to Hello. say Assalamu something? alaikum, sir. Hello. Assalamu alaikum, Usman. Walaikum salam, sir. Can you hear me? Yes. Yes. सर बेसिकली जो presentations थी सर वो ठीक है, presentations तो अपनी जगह पे थी, बट वो इसमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट था और जो उसको डिपिक्ट करना था वो अच्छे से हो नहीं पाया था. मतलब numbers are not supporting the words or sometimes words are not supporting the numbers. कोई लिंकअप नजर नहीं आ रहा था presentation में. Okay. That's a very good Basically, observation. Thank you very much, Usman. This is a very important point. कि जो yes जब sir. initially मैंने explain किया था why was this case study shared with you, तो उस जी वक्त जी जो मैंने चीजें बताई थी वो you know present value and time value of money, एग्जैक्टली net एग्जैक्टली present value, ये चीजें कंप्यूट होती हुई एग्जैक्टली नजर नहीं है मुझे. So therefore बिल्कुल. और सर that's बेसिकली exactly why जितने we need more time. प्रेजेंटर्स थे ना वो उस एंगल से नहीं सोच रहे थे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंसल्टेंसी फर्म में हो और आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपसे पूछता है कि भाई मुझे बाय करना चाहिए, रेंट पे जाना चाहिए, तो बिल्कुल एज अ कंसल्टेंट हमें उस पर फीडबैक देना चाहिए था अपने क्लाइंट को. बिलाल साहब जो हमारे क्लाइंट हैं, और वो ऐसा फीडबैक होता कि वो वन स्लाइड या टू स्लाइड में बस वो खत्म होना था और टू द पॉइंट और क्रिस्प होना चाहिए था, ताकि सामने वाले हम अपने सोल्यूशन बेच रहे हैं ना बेसिकली. तो ये Exactly. Let's say अभी I think there was a time pressure also. So यस although सर. हमने आधे घंटे का कहा था, लोगों ने 1 घंटा लिया प्रेजेंटेशन में, बट अभी भी हम वो स्पॉट ऑन नहीं कर सके. So जी हम सर. we will look at this. We'll look at these presentations on Wednesday, and we will यस see how how people come up with their presentation. Any final comment about the way the presentations were made? Azhar, I'm going to hand over the mic to you for a second. Azhar. Azhar, Bilal, if you want to comment. Please try now. Hello, hello. See, now we can hear you. जी सर. सर जो आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है उसके बारे में जहाँ तक जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्वियसली वांटिंग है काफ़ी चीज़ें. presentations should not be in this manner जिस तरह प्रेजेंट हुई थी. I know there's a need for a lot of improvement, but having said that मैं डिफेंड भी करना चाहूँगा हमारी टीम्स को कि obviously they were not prepared for it perhaps, and टाइम की कमी थी, काफ़ी टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा था और कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करनी थी. उस्मान सही कह रहे हैं कि perhaps none of them were able to incorporate the time value of money element, and but still speaking in terms of overall quality, जिस तरह अरशद साहब ने एंड में प्रेजेंटेशन बनाई, it was really better, much better than the rest. पहली जो प्रेजेंटेशन आई थिंक मिस तहमीना की जो थी उसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन का ही एलिमेंट 2-3 स्लाइड्स पे इनकॉर्पोरेट था, और बाकी 2 में जो प्रेजेंटेशंस थी प्रीएम्बल ही आ रहा था, बैकग्राउंड आ रहा था, आगे इन दी एंड सॉलिड नंबर्स कोई नहीं आ रहे थे कि कैलकुलेशंस क्या हुई हुई हैं. तो इवन आई No, थिंक लास्ट प्रेजेंटेशन एक आधा ग्रुप था जिसमें मैं जब गया था तो दे हैड सेपरेटली मेड अ कंप्लीट वर्कशीट, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई पूछेगा तो हम अपनी प्रेजेंटेशन के साथ ये कैलकुलेशन भी शेयर करेंगे. So which means people had prepared their background words. Some of them had, not all. Some of them had done that work, but then they had kept it as a reserve to answer some questions. However, now that we have more time, we're going to go back and
do it much more in a much more impressive way. So inshallah on Wednesday when we come in, Azhar की भी अच्छी observations हैं, Usman की भी अच्छी observations हैं, जो मेरे points हैं about how the presentations are to be delivered, not just constructed, but how are they to be delivered. Those are also very, very important, and I'm sure all of you are going to take care of that. So I think we stop here. We have taken 30 more minutes. It's a very important exercise. The purpose is, of course, yes, technical discussion bhi hai, correct decision making bhi hai, but at the same time, it is also about coming up and speaking, talking, presenting, putting your point across in the most convincing manner. So that is what the task is that I'm going to leave you with. I'm going to check the WhatsApp group conversations for some feedback, for some points for improvement, ठीक है? Particularly points for improvement. So हम उस group के ऊपर ये conversation continue करेंगे. I think with that we call it a day. Thank you very much. थोड़े से अभी भी मुझे जो management के issues आ रहे हैं, people reluctant, people not joining, people disappearing in the middle. Please remember, the first thing that Sajid and I, when we sat down and said, यार हमें ये program run करना है, the first thing that we asked for was commitment from you. And if this commitment is slipping out, unfortunately, it's not good news, but unfortunately, the objective of 6 digits is also being diluted. Okay, so it depends how serious you are with this kind of work. हमने यहाँ पर एक identify की है weakness, right? अजहर ने भी की है, बाकी लोगों ने भी की है. Presentation के style में एक weakness है, एक lag है. They are wanting more improvement. So अगर हमने identify किया है, तो हमने इसको overcome करना है. Okay? Without this very important skill, I think हमारा objective of 6 digits जो है वो fully secure नहीं हो सकेगा. So I hope all of you will cooperate further. I hope all of you will show more commitment and resilience. Come forward. मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, जो presentations run हुई हैं, मैंने कुछ बुराई नहीं की किसी की, मैंने कोई डांटा नहीं है, right? But it is important that all of you come forward and present. Okay, present, please. It's a different feeling when you're running your own slides and you're making your when you're putting your point across. That's what I want to see happening as well. So inshallah Wednesday 7 o'clock, which means कल भी आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में बैठ के इसको रन करते हैं. मुत्तहिद एक ग्रुप और बना दीजिएगा और उसका लिंक आपने एक टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक ग्रुप और बना देंगे, उसका लिंक आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है. तो जो रिबटल वाले लोग थे, they can go back and prepare their own presentations as well. Okay, there's nobody stopping them. Okay, so if somebody wants to join in tomorrow at let's say 7 o'clock and want to run through or prepare a presentation, by all means. Okay, मेरा ख्याल है कि मुत्तहिद को खुद भी जी मुत्तहिद, you want to say something? No sir, just confirming कि ठीक है, मैं बना लेता हूँ और ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ. जी ठीक है. ये ग्रुप जो होगा will be for the rebuttal group. ये टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ग्रुप है. तो रिबटल वाले जितने लोग हैं वो इसको ज्वाइन करके यहाँ पर अपनी कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में, ग्रुप 1 से ग्रुप 5 तक, उनके लिंक्स अवेलेबल हैं उनके पास. अपने अपने ग्रुप्स में आप ज्वाइन करें और improve these presentations, improve your presentation skills. And then Wednesday when we meet at 7 o'clock, I will look for some excellent presentations and then give you another case study to do. If I can very quickly share with you the case studies I've already downloaded and they are ready with me. I'm just going to share my screen with you in a second. And there we go. तो ये 5 केस स्टडीज मेरे पास पड़ी हुई हैं. सरो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बहुत मजे की है. नंबर्स डोंट लाई स्टैनफोर्ड की केस स्टडी है. HP स्टैनफोर्ड की केस स्टडी है.
कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स लम्स की केस स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग है बट थोड़ी सी लंबी है, कोई 19-20 पेजेस की है। सबसे छोटी केस स्टडी हमने अभी पिक की थी बाय वर्सेस ट्रेंड, तो ये भी लम्स की केस स्टडी थी। ये सब अवेलेबल हैं, ये सब की सब केस स्टडीज मेरे पास तैयार हैं और ये हम इसी वीक में सब की सब कर रहे होंगे। ओके, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अपनी जो ग्लिचेस हैं छोटी छोटी इनको अवॉइड करके वी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल मेकिंग प्रेजेंटेशंस गोइंग फर्दर। चलिए सर मेरी रिक्वेस्ट एक और कमेंट आपसे। जी जरूर सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या हमें अपनी केस स्टडी तक फोकस नहीं रहना चाहिए, जैसे कुछ चीज़ें डिस्कस की गई कि फुली लोन क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया और अगर उसकी जॉब चली जाती है तो सर अगर इस तरह की बातें हम कंसीडर करेंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें आएंगी, जैसे इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, तो ये हमारे डिसीजन को किसी तरफ आने ही नहीं देगा। It does, I fully understand. The thing is that when in a real life situation, this is exactly what can happen. Can you control people from asking questions? Right. I have seen the worst presentations happening where the presenter would say, we'll try to stop questions, will not take questions. I'm sorry, I have a fear of answering questions, and therefore people should not ask me questions. That's the worst thing to do. Better than that is, I'm sorry, I haven't looked at that, I haven't calculated this, I can come back to you on this. These are still better replies. But Right. just saying I don't want to take questions, that's the worst thing to do. Okay, so come prepared. I mean, that's just giving you an idea of how your opposition is going to treat you next time. Okay, so just come prepared with that. uh, there can be easy answers, of course you cannot do all the Sir, calculations under the sun, but there can right. be easy answers also. Okay, Right. chaliye. All right, thank you Ajaz, thank you for your point. I think with that we come to a close. It's 9:40. Sorry for taking slightly longer. There were 27 people still left, and some in the south, about 40 people still left. So take good care of yourselves. Inshallah, see you on Wednesday, and enjoy working tomorrow or at any other time that you feel like working on these presentations. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Take care. Good activity. Take care. Allah Hafiz, sir. Thank you.